ऊंचाहार अमेठी रेल लाइन उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी जिलों को जोड़ने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण रेल परियोजना है। ये रेल मार्ग लगभग 66.17 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य रायबरेली, अमेठी और प्रतापगढ़ जिलों के 81 विलेजेस को जोड़ना है। इस रेलवे लाइन पर 7 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित हैं। ऊंचाहार अमेठी नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत सर्वे, भूमि चिन्हांकन तथा भूमि अधिग्रहण जैसे महत्वपूर्ण कार्य वर्षों पूर्व पूर्ण किए जा चुके हैं। परियोजना के प्रारंभिक चरण में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया गया था। विगत कई वर्षों से परियोजना की प्रगति अत्यंत धीमी है। अतः मैं केंद्र सरकार से ये आग्रह करता हूं कि इस परियोजना की उच्चस्तरीय जांच कराकर एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करें और स्पष्ट निर्देश प्रदान करें, ताकि आने वाले दिनों में इस रेल लाइन का निर्माण पूरा हो सके और रेल सेवा प्रारंभ की जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। गुजरात के जूनागढ़ शहर के अंदर पुरानी रेलवे लाइन चल रही है। जूनागढ़ एक बहुत ही ऐतिहासिक और टूरिज्म के हिसाब से भी बहुत महत्व का शहर है। रेलवे लाइन पूरे शहर में से इस तरह से गुजर रही है कि शहर के थिकली पॉपुलेटेड अंदर के एरिया में 7 रेलवे क्रॉसिंग आता है। अगर बाहर का एरिया भी गिन ले तो 11 रेलवे क्रॉसिंग सिर्फ एक छोटे शहर में से गुजर रहे हैं। और बार बार शहर में ट्रेन गुजरते वक्त ये रेलवे क्रॉसिंग पर रोक लगने से पूरे जूनागढ़ शहर में ट्रैफिक की बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो रही है। आसानी से जूनागढ़ शहर को बाईपास करते हुए रेलवे क्रॉसिंग को बाईपास करते हुए रेलवे लाइन निकल सकती है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि जूनागढ़ शहर में हो रही रेलवे क्रॉसिंग की इन परेशानियों से शहर को मुक्त करने के लिए बाईपास रेलवे लाइन जो जूनागढ़ शहर को बाईपास करती हुई निकल जाए और शहर के अंदर रेलवे क्रॉसिंग की दिक्कतें ना रहे, इस तरह की व्यवस्था करें। धन्यवाद महोदय। Thank you, Madam Chairperson. I want to draw the attention of the House to a commemoration that we have today in Imphal in Manipur. Our Honorable President Murmuji is also taking part. This is the commemoration of what we call in Manipuri Nupi Lal, which was a women's resistance against the colonial forces for creating an artificial famine in the state of Manipur in 1939. And this was the second time the women of Manipur stood up against the feudal and colonial system. The first one was in 1904, which is called the First War of Women in Manipur. And I want to pay my respect to all those women in this country and the rest of the world who have resisted against the colonial feudal system. Ima Singi Mapangandu Machada Pina Bibo Isunu. Thank you so much, Chairperson. Thank you, Vice Chairperson. My special mention is on the subject demand for safety audit of National Highway 66 and compensation for the families of those who have lost their lives at the National Highway construction sites. I rise to bring to the attention of the government the recent collapse of a section of National Highway 66 at Kottayam in Kerala. The accident shows the flaws in the execution of the National Highway projects in the state. The sudden caving in of the road left the vehicles, including a school bus, stranded on the service road. The stability of the reinforced earth wall has been in question since the Courtyard incident, where the National Highway collapsed in a similar manner. The vulnerable terrain of these places, owing to the proximity of paddy fields, cannot afford the present earth-filling method. Apart from this, unscientific construction practices such as insufficient side drain systems, poorly designed retaining structures, etc., are leading to recurrent incidents of National Highway collapses. The public has been repeatedly
raising concerns about unfinished work, absence of basic safety protocols during the construction, etc. The glaring example of the same is the unscientific construction of Arur-Thuravur stretch of National Highway 66, where at least 42 people have lost their lives in road accidents along this stretch, the latest one being the death of a driver who was killed when a girder collapsed into a pickup van. In this context, I urge the government to conduct a comprehensive technical audit of the National Highway 66 and mandate strict adherence to the scientific engineering standards. I further urge to take necessary steps for the immediate dispersal of compensation to the families of those who have lost their lives at the National Highway construction sites. Thank you.